and new that we had studied in the last lecture. So we have seen that what is the difference between traditional cost techniques and strategic cost management. In traditional cost technique, what we were doing, we were using cost accountancy and management accountancy. So whatever data we have maintained product wise or process wise or project wise, we will use this data, we will refer this data, we will analyze this data, and we will take the action. That was the something about traditional costing technique. हम लोग क्या करते थे, एक प्रोडक्ट है, उसके ऊपर कितना खर्चा किया, ये खर्चा क्यों हुआ, और उसके हिसाब से we will try to reduce the cost. That was the technique which we use in traditional costing technique. अभी मॉडर्न कॉस्टिंग टेक्निक यानी स्ट्रेटेजिक कॉस्टिंग मैनेजमेंट में हम लोग क्या करते हैं, we manage the cost, we don't control the cost. Getting this, we manage the cost means what, we will have a flexible approach, we will have flexible approach to manage the cost, to reduce the cost and to control the cost. So here in case of traditional costing technique, we were using, we were giving more focus on internal activities of the organization. Let us say raw material, let us say wages, let us say labor, overheads. तो ये जो इंटरनल एक्टिविटीज और इंटरनल फंक्शनिंग होती है ऑर्गेनाइजेशन के, तो उसके ऊपर ज्यादा ध्यान हमारा था. So we were not focusing on external parameters like customers, like vendors, like suppliers, like government, like competitors price. We were not focusing on. Getting this, that's why what was happening, due to ignorance of customers, due to ignorance of the market trend, due to ignorance of competitors, some of the times our product was failing. Getting this, so this was the drawback of traditional system. Now what we are doing, we are along with focusing on internal activities of the organization, we are nowadays focusing on external factors of the organization, like competitors, like suppliers, like customers. What is the customer demand, and at what price my competitor is selling the product? My price should be equal to that my competitor's price. Means what, I am adjusting my price with my competitor's price. Getting this, so my product is more competitive to my competitors. So this is the advantage of strategic cost management. Getting this, तो strategic cost management का need क्यों हुआ, क्योंकि due to ignorance of external market conditions, we were more focusing on internal parameters like raw material costing, उसके बाद प्रोसेस कॉस्टिंग, बैच कॉस्टिंग, लेबर कॉस्टिंग, ओवरहेड्स, उसके बाद आपका मेंटेनेंस एक्सपेंसेस, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस, परचेस कॉस्ट, वेयर हाउस कॉस्ट. इसके ऊपर हम लोग ध्यान देके हम लोग क्या करते थे, उसको रिडक्शन करने के लिए ट्राई करते थे. जितना पॉसिबल था उतना हम लोग रिडक्शन करते थे और उसके बाद छोड़ देते. Getting this, so for doing this activity, what we were doing, we were referring the traditional costing techniques, we were using the past data of the organization. पिछले साल क्या हुआ, उसके पहले पिछले साल कितना हुआ. So by referring this various cost accounting techniques and management accounting techniques, we were focusing on reduction of the cost, where we were lagging in focusing on external parameters or future decisions of the organization. Getting this, so that was the drawbacks or limitations of traditional tech. तो ये drawbacks से क्या हुआ कि we were not generating profit day by day. Our product was not that much competitive. There was huge difference between my prices and my competitors' selling price. इसलिए क्या होता, my price was, I was not looking towards at what price my competitor is selling price. So due to have a much more difference between my price and my competitor's price, my customer was diverting towards my competitor price and automatically my sale was decreasing. Getting this, so I have not tried to increase my sales by reducing the cost, and it was to reduce the cost, it was not within my control. So ultimately इसका impact क्या हुआ कि let us take an example of Nokia company.
कस्टमर को क्या चाहिए वो देखा नहीं, कस्टमर के हिसाब से दे हैव नॉट मोल्डेड देयर ऑपरेशन एक्टिविटीज, कस्टमर के हिसाब से, कस्टमर के एक्सपेक्टेशन से मैंने मेरे प्रोडक्ट में चेंजेस नहीं करवाए। कस्टमर को कॉम्पिटिटर का प्राइस कितना है, कॉम्पिटिटर का प्रोडक्ट कितने को बेचता है, अकॉर्डिंगली मैंने मेरे प्राइसेस में चेंज नहीं करवाया। इसलिए क्या हुआ, आई हैव टू गो आउट ऑफ द मार्केट। जैसे कि कोडैक फिल्म, उसके बाद ओनिडा इज कम, ओनिडा कंपनी इज देयर, देन सैमसंग प्रोडक्ट इज देयर, गेटिंग दिस। तो ये क्या, सॉरी नोकिया प्रोडक्ट इज देयर। तो ये बाहर गए, मार्केट के बाहर गए, क्योंकि दे हैव नॉट फोकस्ड ऑन स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट। उन्होंने स्ट्रेटेजिक कॉस्ट डिसाइड नहीं किया है, स्ट्रेटेजिकली कॉस्ट को मैनेज नहीं किया है, गेटिंग दिस। इसलिए नाउ to survive in this competition, to survive in this competitive world, we need to more focus on strategic cost management. So that is the need of strategic cost management. तो इसमें हम लोगों ने क्या किया, so strategic cost management, just here it is the updated form of cost analysis. हम लोग updated, in traditional way we are not focusing on, so we are using various strategies. Strategy means what, it is the flexible approach looking towards the problems by various angles. As a strategist, I will have a win-win situation. मेरा भी लॉस नहीं होना चाहिए और मेरे कस्टमर का भी लॉस नहीं होना चाहिए. Both will be get satisfied. Accordingly, we need to prepare the strategies. Okay. So in strategic cost management, we have to manage our cost. To certain extent, I can reduce cost. To certain extent, I can reduce cost. I can overcome the drawbacks. I can overcome the rework facilities so that automatically cost of production will decrease. जितना भी पॉसिबल है उतना हम लोग क्या करेंगे, एवरी टाइम हम लोग कॉस्ट कंट्रोल करने का ट्राई करेंगे, और जितने भी कॉस्ट कंट्रोल होती है उतनी कॉस्ट कंट्रोल के लिए हम लोग ट्राई करेंगे. ओके, नाउ it uses cost information specifically to govern the strategic management process for formulation of the strategies, communication of the strategies, implementation of the strategies, and making control on the strategies. So these are the various stages in the strategic cost management. And the strategic cost management which help to us to identify the value chain activity. कौन से एक्टिविटीज ऐसे कि जो एक्टिविटीज मेरे ऑर्गेनाइजेशन में, मेरे ऑपरेशंस में वैल्यू ऐड करती है, जो एक्टिविटीज which is having certain values, we will continue with this activity. जो एक्टिविटी ऐसी है कि अननेसेसरी है, अनवांटेड है, रिवर्क एक्टिविटी है, वो एक्टिविटी हम लोग क्या करेंगे, स्किप करेंगे, रिड्यूस करेंगे, मिनिमाइज करेंगे. फॉर एग्जांपल, आइडल टाइम ऑफ मशीनरी, इट इज इन आवर कंट्रोल. We will control it. We will have certain provision how to reduce the idle time. उसके बाद rework facility, inspection time, उसके बाद processing time, जो हमारे हाथ में है वो हम लोग क्या करेंगे, minimize करेंगे. Getting this? And the activities which add the value in the product, we will extend these activities. And these activities which don't add any kind of value in the product, we will skip that activity. We will overcome this activity. We will stop this activity. It means what? Unnecessary activities will be stopped and value adding activities will be added. So this is the benefit of strategic cost management. Okay. तो ये strategic cost management में मुझे क्या करना पड़ता है? I have to use cost accounting data as well as management accounting data. Costing accounting data means what? It may you have to use the budget. You have to use the marginal costing techniques, you have to use the standard costing technique, you have to use the cost sheet, and by using these various documents, you will take the decision of strategic costing technique. So here you have to refer the various cost accounting data, cost accounting technique to use or to modify the technique of cost accounting. Here, along with this, you have to study your competitors. You have to study, you have to take the feedback of customers, you have to take the feedback of dealers, you have to take the feedback of retailers, wholesalers, उसको क्या चाहिए. Accordingly, you can prepare your policies. मेरा product बहुत अच्छा है, लेकिन
मेरे प्रोडक्ट का इमेज मार्केट में उतना अच्छा नहीं है, मेरा डिलीवरी चैनल अच्छा नहीं है, मेरे प्रमोशनल चैनल अच्छे नहीं है, मेरे सर्विस आफ्टर सेल अच्छे नहीं है, इसलिए कस्टमर इज नॉट रेडी टू परचेस द प्रोडक्ट. So I have to improve on this. Getting this? And to improve on such parameters, it is the scope of strategic cost management. Okay. And strategic cost management is also focuses on cost reduction. Everything, every day, I should find the ways to reduce the cost of production. Every time, I will reduce the cost of processing if it is possible. And continuous improvement into your product. Continuous improvement में यानी हम लोगों को as per the expectations, as per the need of the customers, I need to add more features in the my product. मॉडल ए यानी बेसिक मॉडल, सुपर मॉडल, लेटेस्ट मॉडल और उसका नया मॉडल. तो हर टाइम हम लोगों को नए फीचर्स मेरे प्रोडक्ट में ऐड करने पड़ेंगे. लोगों को क्या चाहिए वही हम लोगों को प्रोडक्ट के थ्रू उनको देना है. So I should able to fulfill the need of customer. If my customer is happy, then he will tell to others to buy this product. If customer is not happy, that time he will make the bad advertisement of my product. ये नहीं होना चाहिए. इसलिए whatever product you are selling into the market, it's your responsibility that whether your customer is happy or not to check it. Getting this? इसलिए जो कि कस्टमर के एक्सपेक्टेशन से, कस्टमर के एक्सपेक्टेशन के हिसाब से मुझे मेरे प्रोडक्ट में इंप्रूवमेंट करने पड़ेंगे. एंड दोस कंपनी व्हिच हु आर डूइंग दिस, लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ एनी मोबाइल. हर 2 महीने में नया मॉडल लॉन्च होता है. टेक एन एग्जांपल ऑफ ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री. हर 6 महीने में नया गाड़ी लॉन्च होती है. क्यों? बिकॉज इट इज अ पार्ट ऑफ कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट. It is a part of to keeping bonding, to keep bonding with my customers. तो अगर मैंने नया इंप्रूवमेंट नहीं किया, नया मॉडल नहीं लॉन्च किया तो क्या हो जाएगा? अगर मैंने नहीं किया तो मेरा कस्टमर करेगा, सॉरी मेरा कॉम्पिटिटर करेगा, and my existing customer will divert towards my competitors, and ultimately I will lose my business. It should not happen. तो strategic cost management में मुझे क्या करना है? I have to focus on cost reduction, and along with this, I need to focus on continuous improvement in the features of my product. Getting this? And to certain extent, you need to focus on cost control. Cost reduction यानी हम लोग improvement करेंगे. Cost control means what? We should not increase the cost every time. Getting this? Rather than charging more cost, more price or more profit on one product, you will keep your profit minimum, and by selling number of units, you will achieve your profit level. एक यूनिट में 100 कमाने से 4 यूनिट बेच के हम लोग 25 ऐसा 100 का टारगेट कवर करें. 4 यूनिट में हम लोग प्रॉफिट लेवल 25 रखेंगे. मेरा टारगेट कितना है? प्रॉफिट 100 कमाना. तो मैं क्या करूंगा? एक यूनिट में 100 कमाने से मैं 4 यूनिट बेच के 25 रुपए पर यूनिट कमा के मैं टोटल मेरा 100 का टारगेट कवर करूं. गेटिंग दिस? इसका मतलब क्या है? मैंने आई हैव टू इंप्रूव माय सेल वॉल्यूम. I have to improve my sale volume, and I have to keep my product as a competitive price, minimum price. Getting this? तो मेरा अल्टीमेट टारगेट क्या है? प्रॉफिट कमाना. तो मुझे जो प्रॉफिट कमाना है, एक यूनिट बेच के मुझे नहीं कमाना है. I have to sell number of units in the market, and my price should be reasonable price. Then and then customer will continue with my product, and every time I have to go for improvement. Okay, are you comfortable with strategic cost management? Need of strategic cost management, just tell me. Understood importance and need of strategic cost management? Yes, students. Yes, sir. Okay, now let us go for traditional techniques में क्या drawbacks थे वो हम लोग देखेंगे. So here
In traditional cost management programs involves the allocation of cost, overheads to production activities or to production departments which primarily focus on cost control and cost reduction. हम लोग क्या करते थे, इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट का जितना भी सैलरी है वो फिर अब हम लोग प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के ऊपर डालते थे. इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट का एग्जिस्टेंस किसके लिए? प्रोडक्शन के लिए. उसके बाद रिसर्च एंड डेवलपमेंट किसके लिए काम कर रहा है? प्रोडक्शन के लिए. वो उनका भी सैलरी उनके लिए पर, बिकॉज दीज आर द एक्सपेंसेस सेंटर. मेरा रेवेन्यू सेंटर कौन सा है? प्रोडक्शन सेंटर है. गेटिंग दिस. उसके बाद कैंटीन के एक्सपेंसेस प्रोडक्शन के ऊपर डालेंगे, परचेसेस के एक्सपेंसेस प्रोडक्शन के ऊपर डालेंगे, उसके बाद मार्केटिंग के एक्सपेंसेस प्रोडक्शन के ऊपर डालेंगे. सो दिस वाज द अलोकेशन ऑफ कॉस्ट. हम लोग क्या करते थे, वॉट एवर कॉस्ट इज इनकर्ड वी विल बाइफरगेट दिस कॉस्ट प्रोडक्ट वाइज और डिपार्टमेंट वाइज. और उसके बाद जो एक्सपेंसेस सपोर्टिव डिपार्टमेंट के एक्सपेंसेस थे, हेल्पिंग डिपार्टमेंट के एक्सपेंसेस थे, वही एक्सपेंसेस इन ट्रेडिशनल कॉस्टिंग हम लोग क्या करते थे, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के ऊपर डालते थे. Getting this? Because production department is the one department which will be generating revenue, which will be making investment. इसलिए rest of the department like accounting department, inspection department, quality department, research and development department, purchase department, advertisement department, ये जो है supportive department, उनके जो कुछ expenditure है तो वो तो income नहीं कमा रहा है. They are just helping to the production department and sales department. Investment department मेरा कौन सा है? Production department है. और revenue department मेरा sales department. तो ये जो दो डिपार्टमेंट है, investment department and sales department, they were generating the revenue. तो ये डिपार्टमेंट चलाने के लिए other supporting departments are required. अगर परचेस डिपार्टमेंट नहीं रहेगा तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वाला ठीक से काम नहीं करेगा. अगर इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट वाला नहीं रहेगा तो प्रोडक्शन का फिनिश्ड गुड्स का इंस्पेक्शन कौन करेगा? गेटिंग दिस. तो ये हम लोग ट्रेडिशनल टेक्निक में हम लोग क्या करते थे, जो सपोर्टिव डिपार्टमेंट के जो कुछ एक्सपेंसेस है वो हम लोग क्या करते थे, वंस अगेन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के ऊपर और सेल्स डिपार्टमेंट के ऊपर डालते थे. गेटिंग दिस. सो इससे हम लोग क्या करते थे, वी वर टोटली ट्राइंग टू रिड्यूस द कॉस्ट and we were trying to manage the cost or control the cost. So this is all about internal activities of business, where in traditional costing techniques we are not looking towards the expectations of customers, expectations of the dealers, expectations of the your wholesalers, and we have not tried to understand the competitors price. एक्सटर्नल पैरामीटर्स वी हैड नॉट फोकस इन ट्रेडिशनल कॉस्टिंग. हम लोग क्या करते थे, कॉस्ट अकाउंटिंग का डेटा, मैनेजमेंट अकाउंटिंग का डेटा, फाइनेंशियल अकाउंटिंग का डेटा वो देख के उसका स्टडी करके हम लोग अलोकेशन करते थे ट्रेडिशनल कॉस्टिंग. ओके. सो ट्रेडिशनल कॉस्ट मैनेजमेंट सिस्टम सफर्स फ्रॉम नंबर ऑफ लिमिटेशन. उसको बहुत लिमिटेशंस थे. क्या लिमिटेशंस थे? वी वर जस्ट फोकसिंग ऑन इंटरनल एक्टिविटीज और इंटरनल ऑपरेशंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. Traditional cost control programs has an internal emphasis which does not look into the external factors like competition, market growth and consumer demand. इसको ऊपर हम लोग ध्यान ही नहीं देते थे. Okay. Then traditional cost accounting system rely on accounting data that and that data can be at times misleading. उससे क्या होता था? Misleading होता था. So this is about the traditional costing. उसके बाद ट्रेडिशनल कॉस्ट मैनेजमेंट फोकसेस ऑन द परचेस ऑफ रॉ मटेरियल, स्टॉपिंग ऑफ सेल्स विद की ऑब्जेक्टिव मैक्सिमाइजिंग द डिफरेंस बिटवीन परचेस एंड सेल्स. तो वी वर मोर फोकसिंग ऑन इंटरनल एक्टिविटीज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. रॉ मटेरियल का कॉस्ट कितना है, सेल्स का वॉल्यूम कितना है, और प्रॉफिट कमाने के लिए जो डिफरेंस जो है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड सेल वैल्यू, तो उसमें ज्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए वी वर ट्राइंग टू इंक्रीज माय सेल्स और आई विल ट्राई टू रिड्यूस माय कॉस्ट. ये चीजें हम लोग ट्रेडिशनल कॉस्टिंग में करते थे. This traditional cost management technique is the continuous planning, monitoring, analyzing and assessment of all the necessary activities which will meet the goals and objectives of the organization. Again, see here,
we were not focusing on external parameter, and that we have studied, that we have taken into consideration in strategic cost management. ट्रेडिशनल कॉस्टिंग में हम लोग क्या करते थे, ऑब्जेक्टिव्स क्या है, ऑर्गेनाइजेशन के गोल क्या है, स्ट्रेटेजीज क्या है, इंटरनल एक्टिविटीज क्या है, ऑपरेशंस क्या है, उसके ऊपर फोकस करके हम लोग क्या करते थे, कॉस्ट रिडक्शन एंड कॉस्ट मैनेजमेंट टेक्निक वहां पे यूज करते थे, where we have not looked towards the external parameters. Then strategic cost management technique is the process of effectively planning and controlling. अभी strategic cost management में हम लोग क्या कर रहे हैं देखिए, it's a process of effectively planning and controlling the cost involved in the business, usually for the process of store keeping, problem solving and attention direction. So we were focusing on the traditional technique. Along with here what we are doing, we are again focusing on the external activities. So just look at the difference between traditional costing techniques and strategic costing. Just see here, in case of cost cutting, अगर मुझे cost cutting करनी है, cost reduction करनी है, तो what are the areas where I should focus in traditional costing and what are the areas where I should focus as per the strategic costing? Just go through this slide, then we will discuss. So just try to understand the difference between traditional cost techniques and strategic cost techniques. Okay, now see here. If you talk about the cost cutting or cost reduction, at that time, how do we focus on internal activities? अगर मुझे cost cutting करनी है, I know I have prepared the cost sheet. हम लोगों ने yesterday we had seen about the cost sheet. Cost sheet में क्या होता है? डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, उसको प्राइम कॉस्ट भी बोलते हैं. उसके बाद फैक्ट्री ओवरहेड्स होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स होते हैं, सेलिंग ओवरहेड्स होते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स होते हैं. तो इसको ये ओवरहेड्स हम लोग प्राइम कॉस्ट में जब ऐड करेंगे तो मुझे मिलता है कॉस्ट ऑफ सेल. कॉस्ट ऑफ सेल में आई विल ऐड द प्रॉफिट एंड आई विल डिसाइड द सेलिंग प्राइस ऑफ माय ऑर्गेनाइजेशन. नाउ ट्रेडिशनल कॉस्टिंग टेक्निक में वी यूज्ड टू रेफर द कॉस्ट शीट. We used to refer the traditional costing technique. We used to refer the budgeting, where whatever standards are given accordingly, we will try to match our actuals. तो standards के हिसाब से हम लोग actual match करने का try करते थे traditional costing. So because the data is also available, the traditional past data is also available. So by referring this past data, we were focusing to control the costing. तो ट्रेडिशनल कॉस्टिंग में क्या करते थे, कटिंग कॉर्नर्स, यानी कौन से एरियाज है जहां पे हम लोग कट कर सकते हैं, यानी रिडक्शन कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिसिटी में हम लोग सेविंग कर सकते थे. मींस व्हाट, अननेसेसरी 4 जहां पे बल्ब है वहां पे 2 ही लगा के देखेंगे क्या प्रॉब्लम होता है. जहां पे वाटर का, फॉर एग्जांपल मुझे डेली वाटर लगता है फॉर एग्जांपल 500 लीटर, वहां पे हम लोग क्या करेंगे 400 लीटर मंगवाए. कैंटीन एक्सपेंसेस, देन सिक्योरिटी, 4 सिक्योरिटी है वहां पे 2 रख के 2 ही सिक्योरिटी के ऊपर काम चलाएंगे. गेटिंग दिस. उसके बाद अगर 4 ऑपरेटर है तो 3 ऑपरेटर में काम चलाएंगे. गेटिंग दिस. उसके बाद प्रोडक्ट कटिंग टेक्निक्स,
रॉ मटेरियल में हम लोग सेविंग करेंगे. मेंटेनेंस डिपार्टमेंट इज वर्किंग विथ 5 पीपल. वी विल रिक्रूट ओनली 2 to 3 पीपल और काम चला के देखेंगे कैसे होता है. उसके बाद ट्रेनिंग के ऊपर अगर कुछ कॉस्ट है वो हम लोग कंट्रोल करेंगे. मींस व्हाट, वी फोकस ऑन ऑल द एरियाज ऑफ ऑपरेशंस. हर एक एरिया के ऊपर फोकस करेंगे, उसका कभी इफिशिएंसी देखेंगे. वेदर द रिसोर्सेस आर आइडल, we will try to utilize these resources with 100% capacity. कैसे? अगर एक मशीनरी का कैपेसिटी है 50 प्रोडक्ट देना, लेकिन मेरा ऑपरेटर उसी मशीनरी के ऊपर 40 ही प्रोडक्ट बना रहा है, इसका मतलब 10 यूनिट का कैपेसिटी आइडल है. तो हम लोग ऑपरेटर को कन्विंस करेंगे कि यू हैव टू प्रोड्यूस 50 प्रोडक्ट्स because capacity of these units are that machinery is 50. So you have to make 50 units on this product. Getting this? So here what I'm going to do, I will use all the resources with 100% capacity. So in traditional technique, what we are going to do, we will use all the resources. We will try to reduce the cost by this way. And in strategic cost accounting, what you are going to do, here we will prepare various business strategies. And these business strategies, we will try to align with our goals and objectives. So whatever are the goals and objectives of the organization, we will prepare our strategies accordingly. And my goal, my strategy will align with my strategy, my goal. As well as an organization, we will try to increase the profit. We will try to increase the trend of profit. Means what, every year I should increase, every year I should increase to I should focus to increase the profit of the organization. As well as I will get the strategic advantages. Means what, whatever are the resources, whatever is the technologies available with me, I will take full benefit. The technology, the kind of machinery I am having, the same kind of machinery is not available with my competitor, so that I will make its advertisement. Then I will utilize my resources with 100% capacity, 100% efficiency. If the resources are idle with the organization, if the resources are idle with the organization, that time what will happen, it will increase the liability of the organization. Getting this? So all the resources, it may be labor resources, material resources, machinery resources, or sales force, we will try to utilize these resources with 100% efficiency, so that profitability level of my organization will increase. As well as I should more focus on financial parameters. Financial parameters means what, rate of interest, cost of capital. So whatever loan we have taken, what is its a cost of capital, what is its a rate of interest, as well as how much of dividend you are giving to your stakeholders. So we are going to focus on this. So if the securities are available with cheaper interest rate, I will focus on and I will utilize this. Then I will prepare the growth strategies of the organization, and I will try to increase my business. So this is about strategic cost cutting. Strategic cost cutting में हम लोग क्या कर रहे हैं, we will try to utilize more focus on the efficiency. strategic advantage ले लेंगे, efficiency increase करेंगे, फाइनेंशियल कॉस्ट रिडक्शन के टेक्निक यूज करेंगे, कॉस्ट ऑफ कैपिटल के ऊपर ध्यान दे देंगे. उसके बाद हम लोग इंटरेस्ट रेट, जो इंटरेस्ट रेट से हम लोगों ने लॉन्ग टर्म लोन लिया है, शॉर्ट टर्म लोन लिया है, उसके ऊपर भी हम लोग ध्यान देंगे. एंड वी विल ट्राई टू फोकस ऑन द ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. So these are the various techniques, these are the various ways which we have to use in strategic cost management, which are absent in the traditional costing technique. Clear about this? So what is the difference between traditional costing and strategic cost cutting? अभी देखिए, if you try to implement the strategic cost management, that time what are the steps are there? So first step is the resource planning. Resource means what? These are the resources. Yani these resources may be in the form of man, material, then your methods. These are also your resources. Getting this? Where you have made certain investments.
Okay, you are paying the salary to the workers or to the employees, means what? Employees are your resources. If you have purchased raw material where you have done the investment, means what? This is your resources. Getting this? If you have purchased machinery where you have done the investment, this is your resources. Machinery is also your resources. Employees are your resources. Getting this? Managers are also your resources. Methods are your resources. Okay. So here in strategic cost management, you have to plan your resources, requirements of the production, requirements of the organization, where you have done the investment, that is your resources. So in resource planning is the process of ascertaining future source requirement for organization. एक organization रन करने के लिए, एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट रन करने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है, and if we procure this requirement, that is called as the resources, and we have to plan the resources as per the activities. कौन सा product raw material मुझे कब चाहिए, on what date I would require 100 units. Getting this? You have to plan for this raw material. अभी raw material purchase करते समय whether I should purchase in bulk, batches or just in time. मुझे अगर नेक्स्ट डे को रॉ मटेरियल चाहिए तो वो मेरे कंपनी में कब आना चाहिए, बिफोर 1 hour, बिफोर 1 day, बिफोर 1 week, that I have to decide. Getting this? This involves resource planning involves evaluation and planning of use of physical, human and financial resources. Physical resources may be in the form of inventories, human resource may be in the form of employees, labors, financial resources may be in the form of loans and credits from the markets required to complete work activity with their task. अगर ये resources, financial resources, material resources, money resources, अगर ये time पे नहीं आया, it will create the distractions into my production activity. इससे इसकी वजह से क्या हो जाएगा, मेरा production level बंद हो जाएगा, production activity बंद हो जाएगा, and this will be not affordable to me. Most activities involve using people to perform the work, means involvement of the person. Machinery है, raw material है, लेकिन labor time पे नहीं आता, labor is taking absenteeism, manager time पे नहीं है, labor is not there. Getting this? इसलिए there should be the coordination among various people. Everything is there, but there is no coordination between maintenance department and production department and sales department and purchase department and human resource department. लोगों के पास में coordination नहीं है. Due to this lack of coordination, my entire system will fail. This should not happen. That's why you have to plan your resources accordingly. आज अगर raw material आने वाला है, तो आज ही मेरा labor भी आना चाहिए, आज ही मेरा machinery ready होना चाहिए, आज ही मेरा supervisor भी उधर होना चाहिए time पे. अगर ये resources में थोड़ा भी delay हो गया, तो मेरा सारा system, production system delay होता है. Getting this? And due to delay in this delay into this production system, I will not deliver my product to my customer on time. Let us take an example of any car. अगर कोई भी अगर हम लोग product due to this lockdown period क्या हो गया, कोई भी अगर मुझे product चाहिए, let us take an example of car. अगर मुझे कार चाहिए तो अभी मुझे कार नहीं मिलती, मुझे बुकिंग करना पड़ता है. क्योंकि because due to this kind of mismanagement of resources due to lockdown or corona, nowadays we are not delivering our product as per customers expectations. I have to take lead time. Customer का order आने के बाद हम लोग क्या करेंगे, we will find the resources, we will manufacture the product, we will prepare the product and we will deliver. Getting this? तो इसमें क्या हो रहा है, waiting period आ रहा है. Getting this? तो my product will be reached towards market in the late period. तब तक मुझे कस्टमर को वेट करना पड़ेगा, 2 दिन का वेट, 4 महीने का वेट, 5 महीने का वेट. गेटिंग दिस? तो वेटिंग पीरियड में क्या होता है, rather than making the waiting period or rather than to wait for the product, we should go for the competitors product. अगर मुझे एक्टिवा गाड़ी लेनी है और एक्टिवा गाड़ी का वेटिंग पीरियड है 6 महीने का. Getting this? तो as a customer I can't wait for 6 months, so I can go for TVS bike. तो मैं क्या सोचूंगा, चलो भाई 6 महीने वेट करने से ये अच्छा है कि टीवीएस का गाड़ी जो रेडी अवेलेबल है वो लेते.
Means what? Ultimately what I'm doing, I'm losing my customers, I'm losing my sales. Getting this? Due to mismanagement of your resources. तो strategic cost management में मुझे क्या सीखना है? Just in time everything should be there. Everything should be there on time. All resources will be there on time. अगर for example मशीनरी का ब्रेकडाउन हो गया तो I should have another alternative machinery where I should continue my production. एक मशीनरी का ब्रेकडाउन हो गया, वो बंदा 4 दिन के बाद आएगा, तब तक मेरा रिसोर्सेस, मेरा मशीनरी, मेरा सारा प्रोडक्शन सिस्टम 4 दिन में हम लोग स्टॉप नहीं कर सकते. I should have to find other alternatives where I should continue with my production activities. Getting this? So accordingly you have to plan your resources. प्लान ए अगर फेल हुआ तो प्लान बी मेरे पास अवेलेबल होना चाहिए. प्लान ए और बी अगर फेल हो गया तो मेरे पास प्लान सी होना चाहिए. गेटिंग दिस? तो एक वर्कर आज नहीं आया, वर्कर ए नहीं आया तो वर्कर बी मेरे पास होना चाहिए. अगर वर्कर ए और बी भी नहीं आया तो वर्कर सी मेरे पास रेडीली अवेलेबल होना चाहिए. That is about resources planning. Material planning, resources planning, then your methodology planning, money planning. अगर बैंक ए ने लोन नहीं दिया तो बैंक बी मेरे पास रेडी होना चाहिए. कस्टमर सप्लायर ए ने मटेरियल नहीं दिया तो सप्लायर बी मेरे पास रेडी होना चाहिए, मेरे पास अवेलेबल होना चाहिए. सप्लायर बी ने भी नहीं दिया तो सप्लायर सी मेरे पास होना चाहिए. Getting this? So in this way you have to plan your resources. Most activities involve using people to perform the work. Means what? Here coordination should be there. There should be the departmental coordination due to which is required for smooth functioning of organizations production system. Some activities involve materials and consumables. कुछ activities ऐसे होते हैं कि वहां पे material का resources का planning करना पड़ता है. I have to place the order. Okay. So ordering time कितना लगता है, waiting time कितना लगता है, delivery time कितना लगता है. By studying these 3-4 things, I have to place the order. तो मुझे order कितने दिन पहले देना पड़ेगा. आज order दिया तो 15 दिन के बाद material आता है. Getting this? तो waiting time कितना है, ordering time कितना है, processing time कितना है, ये सब देख के मुझे क्या करना पड़ेगा. I have to give the orders of materials and consumables. Usually people use tools such equipments to help them. तो ये सब कुछ करने के लिए मुझे रिसोर्स प्लानिंग के लिए मैं I can use various techniques. That is cost reduction techniques. Then I can use some of the accounting techniques, just in time, break even point. ये सारे techniques हम लोग यहाँ पे use करके we will make exact resource plan. Budgeting is one of the tools that we can use for resource planning. Okay. In some cases automated tools are there, जैसे कि ERP है, SAP है, SAP है. Getting this? This will also help to improve our resource planning. So this is the first step in resource planning. Clear everybody? Resource planning में क्या लिखना है, क्या आता है? Okay. Now next one is the cost estimating. Just go through this slide. Just go through this slide. What is about cost estimating? See, second step of strategic cost management is cost estimating. Estimation means what? Prediction. Estimation is nothing but prediction of various costs incurred in the business. Yani, if I want to purchase the raw material, at that time I can predict what would be the cost of raw material and how much units we have to purchase. For example, 100 units we have to purchase and 10 rupees is the cost. So 100 into 10 is equal to 1000 is the cost of raw material. So this is my prediction. Then
फॉर कॉस्ट ऑफ लेबर, फॉर एग्जाम्पल एक लेबर को 200 रुपया अगर उसका रेम्यूनरेशन है तो कितने दिन उसको काम करना पड़ेगा? फॉर एग्जाम्पल 10 days. So 110 into 200 is equal to 2000 is the cost of labor. Then electricity charges कितने लगने वाले हैं? उसके charges we can estimate. In second step of strategic cost management is the cost estimation. Every time you have to make the estimation, you have to make the prediction of various costs involved in the production process and in the services. Okay, so here you have to quantify the cost of raw material, cost of labor, cost of wages, cost of direct labor, cost of overheads, and cost of machineries. Everything you have to estimate, as well as prices of the resources, what kind of resources you are and what are its prices, that also you have to estimate, and accordingly you have to set your budget. उसके हिसाब से मुझे बजट बनाना पड़ता है. बजट क्या है? इट इज द ब्लूप्रिंट ऑफ योर एक्सपेंसेस. इतना इतना ऐसा ऐसा एस्टिमेशन हो सकता है. So here you have to estimate all kind of direct and indirect cost in the production system. It involves an applications of the techniques that converts quantified technical information about an asset or project into finance and resource information. इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं? We can use various techniques like cost accounting tools, budgeting. Then you can use other like break-even point, just in time. So accounting technique, cost accounting techniques use करके हम लोग क्या करते हैं? Exact cost estimation करेंगे. Cost estimation यानी tentative cost of your production that you have decided in advance, that you have estimated in advance. The outputs of estimating are used primarily. जो estimation हम लोग करेंगे वो हम लोग कहाँ पे use करेंगे? Primarily as inputs for the business plan. उसके हिसाब से हम लोग expansion के हिसाब से हम लोग क्या करेंगे? business का plan करेंगे. Cost analysis and decisions, to take the decisions, because without estimation of the various cost of resources, various cost of material, I can't make the business plan, and accordingly I will take the future decisions. The cost estimation process is applied during the project life cycle. जैसे कि project introduction, growth, innovation, decline जो stage है उसके हिसाब से हम लोग क्या करेंगे? प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के हिसाब से कितनी कॉस्ट आ सकती है, दैट आई कैन एस्टिमेट. ओके, दिस इज द सेकंड स्टेप इन strategic cost management. Then cost budgeting. But cost budgeting means what? It includes estimating or allocating the estimated cost. कितना कॉस्ट आएगा? ये this is the total cost, and this cost we will allocate on the certain department. मेंटेनेंस का इतना कॉस्ट, प्रोडक्शन का इतना कॉस्ट, परचेसिंग का इतना कॉस्ट, एचआर डिपार्टमेंट का इतना कॉस्ट, फाइनेंस डिपार्टमेंट की इतनी कॉस्ट, सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन की इतनी कॉस्ट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की इतनी कॉस्ट. मींस व्हाट? वी विल allocate this cost. First we will estimate the cost, we will predict the cost, and we will bifurcate this cost as per the function wise or as per the department wise. This is called as estimation and allocation of the cost. Cost resources into cost accountant against which cost performance will be measured and assessed. हम लोग cost estimation करेंगे, हर एक डिपार्टमेंट का बजट करेंगे, and we will compare this budget with budget with actual. Standard budget actual budget के साथ actual expenses के साथ compare करेंगे. This forms the baseline for cost control. तो मैंने बजट में लिखा है कि रॉ मटेरियल में 100 रुपीज में एक्सपेंडिचर करूंगा, खर्चा करूंगा. सो आई विल ट्राई, एक्चुअल में कितना होता है? आई विल ट्राई विद दैट 100 रुपीज. मैं क्या करूंगा? आई विल फाइंड सच अ सप्लायर हु विल गिव मी रिक्वायर्ड क्वांटिटी विद ₹100, बिकॉज माय बजट फॉर रॉ मटेरियल इज 100 रुपीज. गेटिंग? अगर पॉसिबल होता है तो मैं 100 को 100 मैच करना चाहूंगा. अगर नहीं होता है तो आई विल परचेस रॉ मटेरियल एट एक्चुअल कॉस्ट, एंड देन आई विल फाइंड द वेरिएंस. आई विल फाइंड द वेरिएशन बिटवीन माय स्टैंडर्ड एंड एक्चुअल. अगर मेरा एम्प्लॉयर का बजट 2000 का है तो 2000 में वो प्रोडक्शन में करने के लिए एम्प्लॉयर का हायर करूंगा. ओके, मींस व्हाट? एवरी टाइम आई विल यूज माय स्टैंडर्ड बजट while doing the expenses. That is something about cost budgeting.
So cost accountant used from the chart of accountants must support the cost accounting processes. Budgets are often time based in accordance with the schedule or to address budget and cash flow constraint. So by referring the budget, I will try to make the expenses. I will try to match my actual expenses with my standard budget. And accordingly, budget will give me guidelines. Budget will give me references. Now next is the cost control. Cost control में हम लोग क्या करेंगे? It measures the variances from the cost baseline, that is the budget, and task effective corrective actions to achieve the minimum cost. Cost control में हम लोग क्या करेंगे? We will try to purchase, acquire the product at budgeted price. Getting this? I will find such kind of supplier who will deliver me product at budgeted price. I will find such kind of labor who will work under budgeted price. I will find such kind of person who will make my expenses at budgeted cost. Okay, so this will give me scope for cost control. Here in under cost control, we will implement certain procedures will be applied to monitor the expenditure. I will clearly monitor the expenditure which I am doing on various stages in my production activities and performance against the progress of the project. Actual में क्या है और standard में क्या है, उसमें variance positive variance है या negative variance, ये हम लोग क्या करेंगे? मॉनिटर करेंगे. As well as we have decided cost baseline. रॉ मटेरियल ज्यादा से ज्यादा 10 रुपीज से ही परचेस करना है, 10 रुपीज से ऊपर नहीं जाना है किसी भी हालत में. दिस इज माय बेस लाइन. Okay, so if I have material available at rupees 9, it is good for me. If it is at rupees 8, it is also good for me. But if it is at 12 rupees, it is not good for me and I should not go for it. Getting this? So that is the cost control. I have kept cost control by setting up some of the standards. I have decided cost baselines in the strategic cost techniques. When actual cost information becomes available, an important part of cost control is to explain what is causing the variances. यानी actual कितना खर्चा आ गया, budgeted कितना किया था, और अगर दोनों में कुछ difference आ गया तो क्यों difference आ गया? What are the reasons for this difference? Okay, so the reasons may be something different. So then we have to study these reasons. ओके, राइट टाइम पे मटेरियल परचेस नहीं किया, राइट क्वांटिटी में नहीं किया, या राइट सप्लायर से नहीं किया, इसकी वजह से मुझे ज्यादा पैसा देना पड़ रहा है. सो दिस शुड नॉट हैपन इन द फ्यूचर. सो अकॉर्डिंगली वी कैन टेक द करेक्टिव एक्शंस. बेस्ड ऑन दिस एनालिसिस, करेक्टिव एक्शन माइट बी रिक्वायर्ड टू अवॉइड द कॉस्ट ओवररन. जो ज्यादा कॉस्ट क्यों आ रही है उसका एनालिसिस करके फ्यूचर में वही कॉस्ट ज्यादा नहीं आना चाहिए, इसलिए हम लोग क्या करेंगे? कुछ एक्टिविटीज प्लान करेंगे, कुछ प्लानिंग स्ट्रेटेजीज डिसाइड करेंगे. सो दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ कॉस्ट कंट्रोल. लास्ट वन इज द बेंचमार्किंग. तो बेंचमार्किंग क्या है? देखिए, बेंचमार्किंग मींस व्हाट? यू हैव टू सेट अप सर्टेन स्टैंडर्ड्स. बेंचमार्किंग मींस व्हाट? दीस आर द स्टैंडर्ड्स. These standards helps to create the closed loop between project A and project B. Project A के standards क्या है? Accordingly, you can state the project B. So here, in case of benchmarking, we are deciding the standards. The knowledge from project A referring to the running and executive projects. क्या knowledge है? Project A जब मैंने implement किया तो सो प्रोजेक्ट ए के हिसाब से हम लोग क्या कर रहे हैं? प्रोजेक्ट बी हम लोग क्या कर रहे हैं? एग्जीक्यूट कर रहे हैं. आर एनालाइज्ड एंड द फीडबैक इज रिफ्लेक्टेड इन द प्रोजेक्ट बी. प्रोजेक्ट ए का एक्सपीरियंस हम लोग प्रोजेक्ट बी बनाते समय यूटिलाइज करेंगे. गेटिंग दिस? सो दिस इज समथिंग अबाउट बेंचमार्क. सो बेंचमार्किंग इज वाइडली यूज्ड बाय टेक्निकल इंडस्ट्रीज टू इंप्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ द प्रोजेक्ट. मींस व्हाट? To execute any kind of project, we will use certain benchmarks. यानी अगर मेरा प्लांट A existing है और मुझे प्लांट B establish करना है,
तो प्लांट ए बनाते समय जो कुछ मेरे स्टैंडर्ड्स रहेंगे, जो कुछ मेरे बेंचमार्क्स रहेंगे, आई विल यूज दिस स्टैंडर्ड्स, आई विल यूज दिस बेंचमार्क्स फॉर प्रोजेक्ट बी और प्लांट बी. दैट इज समथिंग अबाउट बेंचमार्क. तो ये बेंचमार्क का फायदा क्या है? बिकॉज आई विल गेट रेडीमेड सम स्टैंडर्ड्स. No need to rework again and again on the standards because standards are already available. Just you have to follow the standards and according to you have to execute these plans. So this is the these are the various steps in the strategic cost technique. So just see what are the steps we have seen in the strategic cost management. First is the resources का planning करना है. Resources में human resources, material resources, money resources, methods that comes. तो हर एक का मुझे क्या करना है? प्लानिंग करना है. प्लानिंग यानी right resources will be available at right time. No delay in processes. No delay in the availing the resources. ये resources का प्लानिंग है. कॉस्ट एस्टिमेशन में मुझे क्या करना है? प्रेडिक्शन करना है. डायरेक्ट कॉस्ट, इनडायरेक्ट कॉस्ट, जो कुछ प्रोडक्शन सिस्टम में रहेगा उसका सब काम मुझे एस्टिमेशन करना है. और ये एस्टिमेशन करते समय मुझे क्या करना है? प्रोडक्ट लाइफ साइकिल क्या है, प्रोडक्ट कौन से स्टेज में है, इनोवेशन में है, ग्रोथ में है या सैचुरेशन में है, उसके हिसाब से मुझे एस्टिमेशन करना है. एंड फॉर डूइंग दिस एक्टिविटी आई कैन यूज सर्टेन टेक्निक्स. देन कॉस्ट बजटिंग, हर एक का मुझे बजट बनाना है, हर एक रिसोर्सेज का मुझे बजट बनाना पड़ेगा. Because budget gives us guidelines. Budget gives us guidelines. That's why budget is also important. Then by creating the budget, I will compare standard with my actuals and I will try to control the resources, control the cost as per the budgets. And आपके स्टैंडर्ड और आपके एक्चुअल हम लोग क्या करेंगे? एक दूसरे के साथ कंपेयर करेंगे और उससे वेरिएंस कैलकुलेशन करेंगे. वेरिएंस यानी डिफरेंसेस. अगर ज्यादा डिफरेंस रहेगा तो व्हाट आई एम गोइंग टू डू? आई विल ट्राई टू कंट्रोल दिस डिफरेंसेस and I will find out whether the difference is favorable or not. Or last is the benchmarking. We have to set, as an organization, we have to set standards, benchmarks, which is set for project A, and while executing project B, I will use these benchmarks. So this is how the process of strategic cost management. Clear, everybody? Yes, students? Yes, sir. Okay, next lecture we will go for strategic positioning, price differentiation, role of strategic cost management, and cost control and cost reduction techniques. Okay. Oh, the next lecture we will try to finish this first unit. Next lecture को हमारा ये unit खत्म हो जाएगा. Okay. So we have finished our time. Let us stop here. Thank you so much. Thank you, sir. Yes.